हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है स्टेफन फ्राई। अब बता देना भाई मैं नाम ठीक बोल रही हूँ, क्योंकि वैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि नामों में मैं बहुत ही बुरी हूँ। मैं लोगों के नाम बुचर कर देती हूँ। मैंने ऋषि का नाम भी 100 बारी प्रैक्टिस करके सीखा था। मजाक कर रही हूँ। पर सच्ची में नाम बोलने में मेरा बड़ा वो है। तो स्टीफन फ्राई एंड रंजीत Disale, winner of Global Teacher Prize 2020 क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। अरे बाप रे, ये तो एक तो बहुत ही बड़ी अकम्पलिशमेंट है, और ऊपर से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, तो कुछ काफी खास है, और वो भी ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 लेटेस्ट। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखते हैं और पता करते हैं एग्जैक्टली ये क्या है। और वीडियो शुरू करने से पहले, यस फ्रेंड्स, जैसे हम हमेशा कहते हैं, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। It would be an absolute privilege if I could conduct the first interview with you as the winner of this prestigious award. And firstly, you've chosen to share, I think I heard you right, half of this $1 million prize money award with your fellow top 10 finalists. That was an extraordinary, generous thing to say you're going to do. Can you tell us why exactly you've chosen to do this? Because I believe that if I share this prize money with 9 teachers, it means I can I can scale up their work. I can their incredible work is still worthy, and I don't feel I'm the first or I'm the winner. I feel I'm the same among the equals. I'm just same among the equals. And if I share that prize money with the rest of 9 teachers, they will get a chance to continue their work, and the same way we can reach out, we can lighten the life of many students, as many as we can. And that's why I decided to share this prize, because one of my students keeps saying me, sir, sharing is growing. God gives us, and we have to share it. We don't have to keep it for ourselves. And that's why I decided to share the 50% of prize money with my fellow teachers. That's a wonderful thing, and I can hear the voice of my old Latin teacher from a very different age of teaching saying to me that you've announced that you are primus inter pares, first amongst equals. That's a very beautiful thing to say. And just to tell people a little more about your story, you first arrived at the Zilla Parishad Primary School in 2009, I think, and it was then a dilapidated building sandwiched between a cattle shed and a storeroom. And most of the girls at the school were from tribal communities where school attendance could sometimes be as low as 2%, and teenage marriage was very common. Can you talk us through how you turned this around? Yeah, you're right. The first impression when I entered my school building and premises, it was like, oh, it's a cattle shed. And I never imagined that school might look like this. So this was just an indication of parents' indifference towards the education. They never felt that education is a way to change their lives, to change their status. So my first effort was to change that mindset of the parents. If I change their mindsets, then only I can revolutionize, or I can change the status of my students and girls. And that's why I decided to have the community communication program, social interaction with them, learning their languages, being as a member of their family. So they feel that, oh, he's a teacher, but he looks like us, he thinks like us, and he's thinking for the betterment of us. And that's why when they realize and they felt confident, this is a teacher who gonna change the life of our children. So then they started to send the children to my schools, and suddenly, gradually, the you can say that the enrollment gradually increases. And later on, I decided to introduce the fun
in education, fun-induced education. It's like edutainment. Hmm. Students are learning with engaging, exciting manner, and they were just playing the games. They never realize they are learning something. It was like just coming to school, watching the movies, singing the songs, and then going back. So it was like just come for a enjoying place and then go back. And then gradually I started to uh, train them, to educate them, teach them different subject. This And is how my also, journey started. yes, as I mentioned when I talked about your achievements earlier, you created something of a revolution in the use of QR coded textbooks throughout Indian schools. And perhaps for the sake of some watching who aren't quite sure what a QR code is, they've probably seen one, those square codes that अच्छा are वो everywhere these days. QR But code so, can you explain a little about what QR codes are in this context and how you helped achieve this nationwide rollout? Actually, what I was trying, I was my school. We were haven't any electricity. The computers were not there. So my father helped me to buy a laptop, and I was just taking it to my schools. But at that time, what I understand the student span or the attraction center was computer or the digital media, and they liked to learn through the digital media. So my efforts were that I created PowerPoint presentation, videos, animated videos, audio poems like that. But we were transferring, sharing the data through the mobile phones. Like they were just giving me the mobiles. I was just transferring the data from my mobile to their mobiles. But at that time, I realized that there were some files get corrupted. Data was not sufficient to share with them. So I was just trying to find out the solution. How can I give them access to the digital content anytime, anywhere? And one day when I was going through, I went to the shop and I saw that shopkeeper has scanned a barcode, and the price of the product suddenly appears on his screen. And that moment clicked in my mind. There is something in that code that he accessed and he himself knows. And then I started, if I can use or embed those QR codes with my idea in the education, I tried it. And I thought, one I just created one QR code, just embedded a video and tried to experiment with my students. And they were when they saw and they scanned this QR code, and they were, oh, so what you created this is phenomenal. And then I realized, yes, this is what my students wanted to do. And that's why I created the QR codes in the textbooks. Now, each and every textbook has the QR codes. Whenever students wanted to learn, they can just simply scan the QR code and they can access the digital content whenever they want. In this lockdown, in this lockdown, you can see even the schools are closed in India, but still 20 lakh students in my state in the month of October have used the QR codes. So I think that the idea, it was a micro level innovation, but it has really changed the learning style of the students in our country. That's magnificent. And finally, Ranjit, I wonder what you think you might do with the incredible platform, the fame, the celebration of your name and your achievements across your homeland, and indeed the 500,000 now. Yeah. What you will use it for? Have you any plans in your head? What's next? Yes. I had planned, as I told you, the 50% will be equally shared with my fellow teachers, and I will be sharing that 50%. So out of that, some part of the money will be spent for the Teachers Innovation Fund. Like my innovation was scaled across the state and across the country. There might be some teachers whose innovation, like me, could be scaled up, and that might change the teaching or the educational status in India. So some part of the 500,000 will be used for the Teachers Innovation Fund. Then currently I'm running the project Let's Cross the Border. This is the project that is promoting the peace across the conflicted country like India, Pakistan, Israel, Palestine, Iraq, Iran. So I just wanted to form the peace army of 50,000 students by 2030 when we will be achieving the SDG goals. And currently we have
18,000 students being a part of our peace army. So some part of the money will be equally shared with invested in the peace project, and the lateral part of the money, as I told you, will be used for the teaching activities. I already shared the plan with the jury as well. That's wonderful. Well, congratulations again, and how lucky I think we all know your students are to have you as a teacher. I'll let you go now because I know that all generations of your family are very proud and want to help you celebrate and enjoy this very special moment. तो फ्रेंड्स, मैं तो कहूँगी कमाल की अचीवमेंट है और कमाल का वीडियो था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि कोई ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड भी होता है, तो ये मेरे लिए बहुत नया था। और उसके ऊपर से जब ये इसके बारे में पता चला है कि फर्स्ट प्राइज हमारे एक इंडियन टीचर ने जीता है, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं बताऊं, इस वीडियो में जो भी उन्होंने टीचर ने बोला बहुत अच्छा था। ये बात बहुत ही अमेजिंग थी कि उन्होंने कहा कि मैं 50% ऑफ 1 मिलियन, वो मैं जो फर्स्ट 10 प्लेसेस में आए हैं, वो जो नेक्स्ट बाकी 9 है, उनमें इक्वली डिवाइड करके उनको दूंगा ताकि वो भी उस पैसे से कुछ अच्छा कर सके। कोई ऐसा नहीं करता, मैंने कभी पहले सुना नहीं है, मेरे लिए पहली बार है कि ऐसा किसी ने विनर ने किया हो, और वो भी पैसों से रिलेटेड। तो इससे पता चलता है कि कोई लालच नहीं है, मेन उनका यही पर्पस है कि एजुकेशन में जो है रिफॉर्म्स हो, बच्चों को जो है उसकी एजुकेशन जो मिल रही है वो बेस्ट मिले। और उनकी अचीवमेंट्स उन्होंने बताई अमेजिंग थी। पर जो मेरे को सबसे अच्छा लगा, उन्होंने जब इंटरव्यू ली है तो साथ में किसको बिठाया? अपने पेरेंट्स को। और वो पेरेंट्स में आपने अपने उनके फादर के फेस देखा था, उनका फेस हमेशा स्माइलिंग ही था और कितनी प्राउडली ऐसे बैठे हुए थे। तो उसे सोचो माँ बाप को कितना प्राउड फील हो रहा होगा, और कितनी इज्जत दी है उन्होंने कि ऐसे लगा तो उनकी बीवी भी है, बच्चा भी है, पर बीवी बच्चे की जगह अपने पेरेंट्स को उन्होंने किया कि आपने मुझे पढ़ा लिखा के इस मुकाम तक पहुंचाया है। डेफिनेटली बीवी का भी बहुत अच्छा रोल है, पर हमारा इंडियन कल्चर यही बोलता है कि बड़ों को इज्जत दो, उनका मान रखो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मदर भी बैठी थी, चाहे उनको पता नहीं इंग्लिश समझ आ रही हो या नहीं आ रही हो, क्योंकि जिस तरह से ये भी बोल रहे थे इंग्लिश, तो ऐसे लग रहा था, पर पेरेंट्स कितने प्राउड फील कर रहे थे, इट वाज अमेजिंग। और इनकी अचीवमेंट तो डेफिनेटली रोल मॉडल टीचर, मैं तो ये कहूँगी बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अच्छी बात थी, और बहुत ही अच्छी बात है कि कोई ग्लोबल टीचर प्राइज भी है। तो देखिए, अब आफ्टर ऑल किसी ने ये $1 मिलियन जो कह रहे हैं वो दिए हैं इस काम के लिए। मतलब कोई भी इंसान जो है ग्लोबल देख रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि मैं अपनी कंट्री वाले लोगों को ही दूंगा। वो जो देने वाला वो भी कह सकता है मैं अपनी कंट्री में दूंगा और मैं किसी को नहीं दूंगा, मगर नहीं, ये वही थॉट है जो इंडियंस का थॉट है कि आप जो अच्छाई करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छाई करते हैं। तो उन्होंने यही किया है कि पूरे वर्ल्ड में से बेस्ट टीचर ढूंढेंगे और उसको देंगे। और इस बार 2 टीचर जैसे कह रहे हैं कि 2 टीचर जीते थे, उनमें से एक इंडियन थे, विच इज़ वेरी ग्रेट। और एक और जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग नहीं समझते, इंडिया में जो है, हम अगर किसी इंसान को अंग्रेजी नहीं आती तो हम समझते हैं कि वो ऐसे ही है। वो बिल्कुल पहली बात, इंडिया में हर एक का ये एटीट्यूड है। आप किसी को भी देखते हैं, अगर वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता तो आप बोलते नहीं तो ऐसे ही है, राइट। ये चीज़ जो है ये अमेरिका में नहीं है। यहाँ पे अगर किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो जो सुनने वाला बंदा पूरी जान लगाता है उसको समझने की, और फिर वो उसको मोस्ट लाइकली समझ लेता है और रिस्पॉन्ड करता है। जैसे अब ये जो थे, अब इनका एक्शन जो है बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू जो भाई साहब थे जो वहां बैठे हुए थे जिन्होंने अवार्ड दिया है, मगर वो कितनी ध्यान से सुन रहे थे, उनको समझ आ रहा था अगला बंदा क्या बोल रहा है। कभी कोई यहाँ पे नीचे, ये तो ब्रिटिशर थे, हाँ, बस जो भी थे, कोई भी बंदा है वो, क्योंकि आपको अंग्रेजी नहीं आती इसके वजह से आपको कोई ऐसा नहीं सोचता कि आप में मतलब दिमाग नहीं है या आप मतलब छोटे हैं। वो कोई यहाँ से, अमेरिका में भी यही है, जो भी आता है जिसको नहीं आता लोग कभी उसे ये नहीं, वो सिर्फ ये सोचते हैं ठीक है तुम्हें हमारी लैंग्वेज नहीं आती, मुझे तुम्हारी लैंग्वेज नहीं आती। वो हमेशा इसी यही बात करते हैं कि वो कोई बंदा कहेगा देखो भाई मुझे हिंदी नहीं आती तो मैं क्या बोलूँ, तुम्हें अंग्रेजी मुझसे ज़्यादा तो आप मतलब जितनी मुझे हिंदी आती है उससे तो ज़्यादा तुम्हें अंग्रेजी आती है, तो उसी को अप्रिशिएट करते हैं कि कमाल की बात है तुम्हारी ये मदर टंग नहीं है फिर भी तुम इतनी अच्छी बोल रहे हो। तो बहुत अच्छी बोल रहे थे वो, yes. मतलब अगर इंग्लिश नहीं आती भी तो भी उन्होंने बहुत अच्छी बोली, बहुत ही अपना पूरा आइडिया कम्युनिकेट कर दिया।
और कितने अच्छे उनके आइडियाज़ थे कि पीस बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे पैसा, और कैसे उन्होंने QR कोड को समझा कि ये क्या चक्कर है, प्रॉब्लम सॉल्व की है। और ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी तो मतलब हमें काफ़ी लोगों को पता होगी टेक्नोलॉजी क्या है, मगर बहुत ही मतलब आप उनको उनके पर्सपेक्टिव से उन्होंने जिस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व की है, अमेजिंग थी। डेफिनेटली बहुत ही ग्रेट इंसान है। मैं तो ये कहूँगी जिनके ये टीचर हैं बहुत ही लकी हैं वो बच्चे। और जैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कोई टीचर बोलेगा कि मैं क्यों मेहनत करूँगा, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, पर उन्होंने खास जाके कम्युनिटी में मिक्सअप हुए, पेरेंट्स के साथ इस टाइप की फ्रेंडशिप की कि उनको समझा सके कि कितनी इंपॉर्टेंट है इन लड़कियों के लिए स्टडीज, और उनकी पढ़ाई से आपकी फैमिली में भी चेंजेस आएंगे, आपकी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है बेटर होएगी, उनको अच्छी जॉब्स मिलेंगी, सब होगा, उनकी लाइफ भी अच्छी होगी। तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।